गुरु रूप संगत जी आरती ले लीजिए। नमस्ते, सत श्री अकाल गुरु जी, साथ संगत जी, जी आया नू। अज दा हुक्मनामा दरबार साहब, श्लोक महला तीजा। पूरब लिखिया कमावना, जे करते आप लिखास। मोह ठगौली पायन, विसरिया गुणतास। मत जानो जग जीवदा, दूजे पाए मुहास। जिन्नी गुरमुख नाम ना चेत्यो, से बहन ना मिलनी पास। व्याख्या। पिछले कीते कर्मां अनुसार मुढ़ तो जो संस्कार रूप लेख लिखिया भाव उकरिया होया है, ते जो करतार ने आप लिख दिता है, वो जरूर कमाना पैंदा है। उस लेख अनुसार ही मूँह दी ठगबूटी जिसनों मिल गई है, उसनों गुणां दा खजाना हरी विच ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਸਮਝੋ ਜੋ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਮੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸਿਮਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿਣਾ नहीं मिलता। बेअंत बेअंत शुक्राना गुरु जी महाराज, आप ही की कृपा है कि हम संगत के साथ आपका गुणगान सुनते हैं। आज आपने सोनिया मेहता आंटी जी को चुना है। With folded hands and bowed head, I request आंटी कि वो अपने आप को अनम्यूट करके गुरु जी की ब्लेसिंग्स हम सबके साथ शेयर करें। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम शुक्राना ये सेवा देने के लिए। इनफैक्ट हर पल का शुक्राना। संगत जी, गुरु जी is so loving, kind, merciful, benevolent. You know, he has made us God-loving from being God-fearing. Also, the awareness of being in gratitude has also stemmed from the fact that we are attending satsangs and all this. We are like learning, and that awareness of gratitude is coming forth, and it is so important. You know, this is where relevance of satsang and sharing comes in. It's through satsangs that even I have understood the true meaning of gratitude and to be in gratitude every moment. कहते हैं ये जिस शुक्राने में रहो, बाकी सब अपने से होता रहेगा। Today morning, in fact, I heard satsang of Manmohan Uncle Ji, and he was narrating, you know, this is where I'm saying through, and satsangs are so important. And as I said, relevance of satsangs, shabads, sharing, as we say now, it's even guidance comes forth, instructions come forth. His satsang, I'll very shortly tell, in short I'll tell, he was in Switzerland for some assignment, and he was alone that day in his room, in the hotel room, and suddenly in the night he felt stabbing pain, discomfort in the heart region, and he knew it was something serious, but there was no one whom he could call for assistance or didn't know what to do. But at that moment, he remembered listening to a satsang of another uncle who said he had a similar problem, some problem, and he said that मैंने गुरुजी का स्वरूप जिस जगह दर्द थी, जिस जगह बहुत डिस्कम्फर्ट था, वहां रख दिया। एंड श्योर इनफ वो अपने से प्रॉब्लम, वो समय जो था प्रॉब्लम का टल गया।
And uncle remembered it at that time, and somehow he managed to reach his shirt pocket, which was lying, I suppose, next to his bed, which inside the pocket there was Guruji's Swarup. So he could take it out and place it, and that just got him through the whole episode. And next day he was fit and fine. This also tells us the importance Guruji ka Swarup. Kitna, it's Guruji. Swarup nahi hai. But this is where I'm saying, कई बार क्या होता है, हम ये कहते हैं, ये तो सत्संग सुने हुए हैं. But the thing is, this is like medicine. आप मेडिसिन भी तो लेते हैं ना किसी बीमारी के लिए, हर रोज लेते हैं बिना नागा. तो ये भी गुरुजी तो महाशिव, डॉक्टर ऑफ एवरीथिंग. This is his dose of medicines. And कभी आपने एक सत्संग सुना होता है, उस वक्त आप नहीं रिलेट कर पाते, बट सेकंड या फिर कभी सुनते हैं तो सडनली सम पॉइंट स्ट्राइक यू. Oh yes, ये तो मैं भूल गई थी. Oh yeah, it's important. It's like that. Shabad put you in that meditative state, and then certain answers you get through Shabad and satsangs. Sangaji, Guruji, as everybody by now knows, spoke very little. But very often, Guruji would reveal his sense of humor and wit. I think he did that more to, cloak his divinity. Because we never, I think, or most of the old Sangat, never realized that we were, in presence of Mahashiv. And we knew, at least I never realized. I knew I was in presence of Puran Guru. I was in presence of some very elevated soul. And I just had the feeling, this is it, I've come home. But I could never, at least, perhaps I never thought that I would be so fortunate enough to be in presence of Almighty. तो वो अपनी किस्मत में, अच्छी किस्मत पे इतना यकीन नहीं आता है, इसलिए ख्याल ही नहीं आया. Yet we knew, we were seeing, as loose term I could say, miracles though, and we were witnessing things, and we were witnessing what was happening in our life. But still, those thoughts, Guruji had just cloaked it completely, hid it from us all. And I mean, we were in his presence. If we were so fortunate to at times converse, it just never struck us. Sangaji, and I feel कि जो जिन्होंने उनको थोड़ी देर देखते ही रब मान लिया, वो तो मोक्ष ही प्राप्त करेंगे, isn't it? जिसको मतलब इतने जन्मों से they had good fortune that this lifetime they came, and in presence of Guruji they saw divinity, that perhaps definitely they will attain moksha. And that is our goal of all of us, ultimately. Sangaji, I a very dear friend of mine, Gauri Aunty, mentioned about Guruji to me in 2004, around June, July. And I don't know,
जैसे मैंने गुरुजी के बारे में सुना, I just felt एक ना खिंचाव मुझे महसूस हुआ एकदम. And I just told her, I said, अच्छा जब भी जाओगे, because वो हर फंक्शन में और वो दिल्ली चली जाती थी, तो मैंने कहा जब जाओगे मेरे को बताना, and I'll also, book my flight and come along with you. But एक desire थी जाने की. But ultimately मेरे दर्शन गुरुजी के February 2005 में हुए. But एक चीज मुझे तब बाद में समझ आई कि गुरुजी ने कहा था कि जब तुहाडे दिमाग विच ख्याल आंदा है गुरुजी के जाना है या सत्संग वास्ते जाना है, your journey begins then, and nobody can reach satsang or bade mandir or in presence of Guruji, jab Guruji physical form में थे, without his Guruji Maharaj's permission. बुलावा आता है और वो मैसेज आता है, तो अगर आपने पकड़ लिया, it's your good fortune. नहीं तो some गुरुजी ऐसे भी इंसिडेंट्स हुए हैं कि जब गुरुजी ने किसी को मैसेज दिया है उनको आने का, मिलने के लिए, बट वो गए ही नहीं. इमेजिन आपको भगवान बुला रहे हैं, नहीं उस वक्त समझ आई. ऐसे भी होता है. इट्स जस्ट आई डोंट नो कर्मों का खेल है या क्या है. बट 2005 फरवरी मैं एम्पायर स्टेट गई और वहां गुरुजी 6:30 के आसपास पहुंचे थे और गुरुजी साइड बोर्ड पे बैठे थे. एंड as I entered, there are 2 steps there, and as I just took 1 step down, and Guruji just turned and looked at me. And तब मुझे गुरुजी के बारे में कुछ नहीं पता था, मैंने उनका स्वरूप भी नहीं देखा था. So I just presumed कि वो गुरुजी, and I just immediately उस वक्त ना I felt my soul, I think I felt I've come home. That was the feeling. I've come home. कोई if but कुछ नहीं. See, just that. And then, of course, Guruji spoke to me. I'll just cut this satsang short, Sangaji, because I've already narrated this on this platform, but I like to. But the important thing that Guruji, at that point, the 2 things happened at that point. Were one thing, Guruji asked me, Aunty, das tenu ki chahiye? And he emphasized on the word then, you, what you in particular want. And at that point, I felt, what can you ask? Because any thought that came in my mind was so materialistic or so, kya puche? Kya bole? Ye wo, so nothing seemed appropriate. So I just said, Guruji, aapki blessings. And Guruji smiled at me. That was so special. And said, Baja, langar kha ke jana. And then I wanted to ask him some. My mother was ill. तो उनसे इसके बारे में बात करनी थी. तो जब शब्द, तो गुरुजी थोड़ी देर में चले गए अंदर अपने रूम में और फिर बाद शब्द चल पड़े. And Guruji came. And that aura, तो गुरुजी अपने चोले में आए और अब सीधा अपनी गद्दी पे जाके बैठ गए. That thing was mesmerizing, absolutely mesmerizing. Or it's difficult to say in words. This was pin drop silence, always, other than the Shabad playing. And once the Shabad were over, Guruji just looked towards me. And somehow I just knew he was calling me without saying a word. I just got it. I do telepathy at work, whatever you may say. And I went and I told him and whatever. And then Guruji said, Acha baja, langar kha ke jana. Second time he said. And मैं वहीं पे तब तक लंगर वो चटाइयाँ वगैरह लग चुकी थी और मैं वहाँ बैठ गई और लंगर किया और
फिर बाद में हाथ धो के जब आज्ञा लेने आए तो गुरुजी again asked me, लंगर खादा है? I said, हाँ जी गुरुजी। और मैं बिल्कुल उनकी चरणों के पास ही जगह मिली थी मुझे लंगर मैंने वहां पे लेने की, तो मैं उनके सामने ही थी ना। said, हाँ जी। और कहते अच्छा कल आना, लोटा लेके आना। So this is 3 times he's, and this is the point I want to tell all, Sangaji, the importance of langar. Because the blessings of Guruji at a satsang flow through chai prasad, langar, and shabads, where you get answers and blessings flow. And I think on Zoom, it is through the shabads now. So, and Mahapurush एक चीज 3 बार बोलते हैं, और जबकि बहुत कोई इंपॉर्टेंट चीज होती है। एंड अगर उन्होंने कोई इंस्ट्रक्शन भी देनी है वो 3 बार देंगे। आपने समझ गए और कर ली तो ठीक है, नहीं तो फिर नहीं कहेंगे, क्योंकि गुरुजी के अंदर से महापुरुषों दी मौज है। मौज हो गई तो कह देता, नहीं तो फिर मुड़ के कद आना ही है वक्त पता नहीं। And in 2000, this was 2005, and of course, uske baad there are many satsangs, but I will not go into that today. I'll go straight to 2000, and of course, 2007 also. Mahasamadhi is coming, so anyway, I'll go straight to month 2009. In October 2009, I was with at Gauri's place, and she had called me and then said, "Okay, acha chalo na aise karte hain, I want to call satsang sunte hain." Because 2008 September में वहाँ पे हमारे कुवैत में सत्संग शुरू हो चुके थे। In the Middle East, I'm sorry, I should not even be mentioning. So we made a call to someone and they didn't pick up, and called somebody else, उन्होंने नहीं उठाया। तीसरा फोन करा, नहीं उठाया किसी ने। चौथा फोन करा रमा बहल आंटी को जलंधर में, उन्होंने फोन उठा लिया और हमने वैसे ही कहा कि गुरुजी के बारे में कुछ बताइए, तो उन्होंने 15-20 मिनट सत्संग करा। एंड उसके बाद 20-25 मिनट, एंड फिर आंटी ने कहा कि अच्छा चलो हम उनको मास्टर जी को फोन करते हैं हिमाचल प्रदेश में। एंड वहां करा तो उन्होंने इमीडिएटली, कहते हैं वो नॉर्मली उठाते नहीं है बट लेट्स ट्राई, उनको इमीडिएटली फोन उठा लिया उन्होंने, और उन्होंने इमीडिएटली कहा तुसी लोग 5 फोन कर चुके हो, इत्थे उत्ते फोन करन दी कोई लोड़ नहीं है, मंत्र जाप करो। एंड उन्होंने फोन रख दिया। We were stunned. कहते हैं इनको कैसे पता चला? She called back same number, and उन्होंने उठाया, said, अंकल आपको कैसे पता हमने 5 फोन करे? And he said, a headquarter है, मंत्र जाप कितना करो, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। That voice, that message was from Guruji, coming through Master Ji. And Sangat Ji, that message was for everybody.
to tell us how important mantra jap is. The importance of mantra jap. It has come straight from a message, direct. And Sangat ji, Guruji हमारे अंग संग हैं, हमेशा हैं. एंड वो समाधि के मतलब कभी होता था कि गुरुजी कैसे, मतलब we're so used to his physical presence कि कई बार थोड़ा सा लगता था कि तो गुरुजी कहाँ हैं. हमें पता है फिर भी फ्रेग्रेंस आती थी, फिर भी फीलिंग होती थी कभी. एंड वो आप एंड कई बार डिस्टर्ब होते हो. एंड दिस हैपेंड विद मी इन 2010. For some reason I was disturbed and I said, Guruji आप होते तो कुछ ऐसे थॉट्स चल रहे थे. एंड सोचते सोचते I went to the restroom and I don't know what, looked in the mirror and I was wearing a boat neck shaped shirt, top. And so on my collarbone, on the right side, I saw a red mark and I went close. I thought it was a bite or a bug bite or something. But that was a distinct shaped Om on my collarbone. And this is how Guruji told me कि मैं अंग संग हूँ, सतगुरु प्यारा मेरे नाल है. आज ये शब्द भी प्ले हुआ. And this is one of my instant connectivity. And this is how Guruji gives you messages. Guruji makes you feel, you believe कि मैं हूँ, मैं साथ हूँ, मैं हमेशा साथ हूँ. और ये मेरे साथ नहीं, सबके साथ है. हर एक संगत के साथ है. And that Om lasted for a few days. I showed it to Aunty also. And ये जो भी परेशानी होती है, जो भी चीजें होती हैं, सब गुरुजी सब करा देते हैं. वो हमेशा साथ है. संगतां दे कारज आप खलोया, हमेशा साथ है सबके. Even this period, ये जो था 2010, 2012 was very intense. I had a lot of darshans, there's been a lot of satsangs I've had. And Bade Mandir has been an incident जब मेरे साक्षात गुरुजी के दर्शन हुए थे वहां पे, live in Bade Mandir. और एक बार क्या हुआ, I was in Delhi. I went to Bade Mandir and it was a non-sangat day, yes. And I had मैं एक अगले दिन फ्लाइट थी तो इसलिए मैं वहां गई और मैंने मतलब परमिशन ली गेट से और I went in. तब जाने देते थे, तब इतनी संगत नहीं थी. बाद में तो एक्सपोनेंशियली बढ़ी है. So the graph's gone all crazy. It's not a steady growth. तो मैं ऐसे पीछे से परिक्रमा कर रही थी बड़े मंदिर का. तो पीछे मैंने देखा जिस से हम दरबार से एग्जिट करते हैं डोर टुवर्ड्स लंगर हॉल, वो डोर खुला था और एक सेवादार अंकल खड़े थे वहां पे. और मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा अंकल मैं अंदर जाके दर्शन कर लूं. तो एक फ्यू सेकंड्स चुप रहे, फिर कहते अच्छा आंटी आप जाइए पर तुरंत आ जाना, एक सेकंड भी नहीं रुकना. आई सेड यस अंकल, ठीक है. तो आई वेंट इन और मैंने दरवाजे से 2 कदम अंदर लिए और जहाँ पे वहीं से मैंने माथा टेका एट द साइड. वहां से माथा टेका और मैं and as I raised my head,
I saw जो मेन बड़ा स्वरूप है गुरुजी का, in that black and white चोला, जो रॉकस्टार चोला होता है, उस पे गुरुजी उधर अमृत वर्षा हो रही थी. And I just looked and I again माथा टेकोड एंड मैं टर्न कर गई. मुझे याद आया कि मैंने अंकल को बोला था कि मैं मतलब 1 सेकंड भी नहीं रुकना. उन्होंने बोला था ना, आई सेड हाँ जी मैं नहीं रुकूंगी. और एक टर्न, और जैसे मैंने टर्न करा, पीछे उधर 2 अंदर अंकल थे 2. उनमें से एक, मुझे आवाज आई पैरों की जो चल के आ रहे हैं, आंटी आंटी. और आई टर्न अगेन, आई सेड हाँ जी अंकल. आप अंदर कैसे आए? आई सेड अंकल मैं बाहर जो अंकल खड़े हैं उनसे पूछ के आई हूँ. कहते हो ही नहीं सकता, आप झूठ बोल रहे हो. ऐसे नहीं अंकल, मैं ऐसे कभी नहीं अंदर आती, मैं उनसे पूछ के आई हूँ. ऐसा नहीं. तो आई सेड अच्छा, आई मीन आई डिडंट से एनीथिंग. और मैं क्या बोलूं, उन्होंने मुझे अच्छा खासा डांट दिया. एनीवे आई केम आउट एंड श्योर इनफ अंकल नीचे खड़े थे. कहते हैं आंटी आप दर्शन हो गए? मैं कहा हाँ जी दर्शन हो गए, बहुत अच्छे हो गए. बट वो अंदर अंकल, सेवादार अंकल, वो मेरे से बड़े नाराज हो गए और कि मैं अंदर क्यों आई. और नरेटेड क्या हुआ, उन्होंने क्या बोला. ऐसे तो आई एम सॉरी, कुछ गलत ऐसे. कहते नहीं आपको बात बताऊं. ही स्टार्टेड स्माइलिंग. आई सेड इंस्टेड ऑफ टेलिंग मी कि डोंट वरी सब ठीक ऐसे, एंड ही स्माइलिंग एंड आई एम टेलिंग हिम कि आई हैव गॉट स्कोल्डेड. तो कहते आंटी आपको एक बात बताऊं. मैं कहा हाँ जी. कहते हैं जब अनजाने में अचानक ऐसे हो, विदाउट योर इंटेंशनल अनइंटेंशनल ऐसे कभी हो और आपको डांट पड़े, पता है ये गुरुजी आपके कर्म काट रहे होते हैं. when you get scolded by sevadar, because we are supposed to always obey the sevadars. जो बोले जैसे उनको वो मानना है. एंड कभी अगर एंड ये ऐसे नहीं होता है कि कोई भी आके आपको डांट देगा, नहीं. बट जब कभी ऐसा इंसिडेंट होता है, इट मीन्स कर्म कट रहे हैं. So anytime when you're told not to do this or not to do, never mind. But ये नहीं कि आप intentionally गलतियां करें ताकि आपको डांट पड़े और आपके कर्म कटे. It doesn't work like that. तो ऐसे नहीं होता है. But yes, that is something I felt I should. And you know, and Guruji, another thing is संगत जी, you know, हम लोग कहते हैं, कई कहते हैं मैं गुरुजी तुम्हारी सुनते नहीं. गुरुजी लिसन्स. गुरुजी दबी दबी ख्वाहिश भी सुन लेते हैं. कभी फिर मौका हुआ तो मैं नरेट दो सत्संग, बिकॉज सत्संग तो हैं बड़े मंदिर में जो इन्होंने दबी दबी ख्वाहिश डुगरी के. एंड another time when I can, what happened this year I will definitely, but today I just want to tell you कि गुरुजी सुनते हैं. I was in Kerala in 2019 and had gone with my children, grandchildren. तो ऐसे ही वहां पता नहीं क्यों मेरे को एकदम गुरुजी के ऐसे ख्याल आने लगा. I said I'm just sitting here. I was watching the ocean and saying, पता नहीं ऐसे गुरुजी का ख्याल आ गया. I said I'm here and I'm missing satsang. You know, 25th December का satsang and वो सब मिस कर रही हूँ. And then I thought, अच्छा चलो अभी बैठ के, let me, I'm in Kerala, so what do? Go for an Ayurveda massage. So I told the hotel people, we were in Leela Resort. I said, I'd like to go. Can you arrange a golf cart? कहते हैं हाँ जी, take 10 minutes. So instead of sitting there, after 5 minutes, I said, bye, sit. I got out of the door. There's a sliding glass door and you have to just walk 3 steps, then there are 7 steps and you get onto the road. The terrain is up and down and the golf cart comes there. So I thought I'll walk towards that. And as the door opened and I took a step out, what do I see? 3 steps, right at the bottom of those 7 steps is a peacock. And immediately the strike hua nahi. But peacock turned back towards me and then took 1 step up, went up that 1 step, turned again as if to say, follow me.
And I took one step, and then the peacock took another step, and that's how went up to the 7 steps, and the peacock then just flew away. And it's then dawned on me, and I just stood there. I said, Shukrana, Guruji, thank you. This Guruji's presence is felt when you unexpectedly sight a peacock or a butterfly. So Guruji listens. Dil se pukaro, और मैं दिल से मिस कर रही थी, दिल से पुकारो, and he listens. And Guruji also, it's like, मन से होना चाहिए, जो भी काम करो, do with the right attitude, at the right time. नियत साफ होनी चाहिए. That's important. At times, ऐसे भी immediately सुन लेते हैं गुरुजी, and at times it's not so soon. It doesn't. It's you feel के गुरुजी सुन ही नहीं रहे, कब से क्या हो रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा है, कुछ काम ही नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा. कभी ऐसे भी होता है. It takes long, but believe me, गुरुजी सब सुनते. जो मांगे ठाकुर सोई सोई दे. कभी ऐसे भी होता है. मेरे साथ 2013 में हुआ था या 12, I don't remember, but it had happened. I was in the Middle East and I had to go to Delhi for some work and appointment with the lawyer. वो सब फिक्स था. मुझको जाके मिलना था और सारा कुछ लाइन अप था. And for some reason, पहले तो टिकट नहीं मिली. फिर for some reason I had to, the travel agent said कि आप यहाँ आ जाइए यहाँ. I couldn't. I would sit in the car and go and take a wrong turn, go somewhere else, do something. एक बार कार खराब हो गई, तीसरी बार कुछ और हो गया. I was so frustrated. ये हो क्या रहा है? And I remember I called Rama Aunty. I don't know why, how I had a number, why I thought of her, I have no idea. But I called her and immediately she said, हाले तक समझ नहीं आई. गुरुजी कह रहे हैं इत्थे उत्थे गाड़ी विच नहीं घूमना, चुप करके घर बैठ जाओ. And another thing she said, आपकी भक्ति में कमी है. Just 2-3 minutes बात हुई, उसमें ये हुआ. And I was stunned. I said, ये क्या हुआ? ये क्या बोल दिया इन्होंने? भक्ति में कमी है. और मैं सोच रही हूँ कि अच्छा मैं मंत्र जाप नहीं कर रही या मैं शब्द नहीं सुन रही. और मेरे को पता नहीं, उन 4-5 दिनों में कुछ करने को मन नहीं कर रहा था, ना शब्द सुनने का ना कुछ. And 3-4 days later, one day I just माथा टेका and I felt, I said, Mehta, I felt like listening to a shabad. I listened, I went, and suddenly I said, I think I'll go to the travel agent today. मैं गाड़ी निकाली, मैं ट्रैवल एजेंट के पास पहुंच गई. अच्छी प्राइस पे टिकट मिल गई, जो टाइमिंग्स चाहिए थे मिल गए, सब कुछ. And I reached Delhi and early morning flight पहुंचती है, so मैं फटाफट नहा के और I went straight to the office where I had to meet the lawyer. And thinking in my mind that I'll go and apologize, पूरा 1 हफ्ता लेट आई हूँ. और मेरे पास उनका फोन एक नंबर था जो मैं कर रही थी to tell him कि I'm getting delayed, I'll come few days later, but somehow लग ही नहीं रहा था नंबर, फोन ही नहीं लग रहा था और मेरे पास और कोई नंबर भी नहीं था. Anyway, I reached, वहां गई सोचते सोचते उनके वो ऑफिस पहुंची, और जैसे ही पहुंची तो वो खड़े हो गए हाथ जोड़ के. आई एम सो सॉरी मिसेस मेहता, आप तो हफ्ते से मेरी वेट कर रहे होंगे. आई एम सो सॉरी, मैं तो आउट ऑफ टाउन था और वहां बहुत अर्जेंट काम था और मैं वहीं फंस के एंड ऑल दैट. तो
I don't know, at that instant thought came कि जो हो रहा है वो बहुत अच्छा है और जो नहीं हो रहा उससे भी अच्छा है, क्योंकि जब होता है ना तो फिर गुरुजी की मर्जी से हो रहा है, उनकी टाइमिंग में हो रहा है. सो डोंट पुश थिंग्स, जस्ट नहीं हो रहा है तो सिट बैक एंड रिलैक्स. कभी वो भी अच्छा होता है जो नहीं हो रहा है, बिकॉज जब होएगा, एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड, जो everything went smoothly as per my desire, liking, everything. That visit was totally successful. Bilkul badi. And also another thing I read, understood what Rama auntie had said, aapki bhakti mein kami hai. I was thinking कि मैं ये नहीं कर रही, वो नहीं कर रही, but then I realized what she was telling me was not all this. She was telling me, believe. Believe. अगर believe करते हो तो पूरा करो. No half measures, won't do. And then believe that Guruji will sab hoga at his time, in his way. And all what can we do for Guruji? हम तो क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते. हम क्या कर सकते हैं गुरुजी के लिए? हम सिर्फ we can be good devotees. And how do we become good devotees? हम क्या करें? We just have to follow guidelines. Basic. And most important, जो गुरुजी हमेशा कहते थे, निंदा नहीं करनी. जो भी ब्लेसिंग्स हम लेते हैं, ये सब अटेंड करके आंदे रहा करो, सत्संग अटेंड करो, वो सब करते हैं, और फिर हम ये सब करके सारा कुछ न्यूट्रलाइज करके बैठ जाते हैं. नेगेटिव, इफ नॉट, आई होप न्यूट्रलाइज तक ही होता होगा, नेगेटिव ना हो जाए. So those things we have to follow. And सत्संग में गुरुजी, बेसिक चीजें, do the right thing at the right time with the right attitude. And जब होता है ना, मंत्र जाप करें, सो पावरफुल. मंत्र जाप करें, गुरुजी की महिमा करें. हम इतना ही कर लें, बहुत है. And we have to, जब प्रॉब्लम्स आती है ना, ये भी कई बार प्रॉब्लम्स आर ऑल्सो लिटिल टेस्ट. प्रॉब्लम्स आती हैं तो हम रोना धोना, हाय तोबा शुरू कर. नो, दैट्स नॉट इट. हैव फेथ and be brave. Problems are little tests. करना तो सब गुरुजी ने है, बट एक हमने भी तो एक वो पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है. नहीं, no worries, Guruji. And we have to, and what is that? Try and find solution, stay calm. बाकी सब, surrender, ये वो भूल जाओ. This will all come when Guruji wants it to happen. All we have to do is take that one positive step, stay positive. बाकी सब गुरुजी करेंगे. You walk one step, rest all 99 step गुरुजी will walk. 100% आपका सब होगा. And try, mantra jap kariye, stay quiet, stay in silence for some time. That is how telepathy will work. That is how Guruji will connect to you. All things great are taken and given in silence. Guruji once told an uncle who is now in New Jersey, all things great are given and taken in silence. Sangat ji, ये 3 शब्द आप हमेशा याद रखिए. सतगुरु प्यारा मेरे नाल है, संगतां दे कारज आप खलोया,
Jo mange Thakur, soi soi devi. And satsangs are many, as I said, and if I get another opportunity, Guruji chahenge, so I'll definitely share with you all, especially what all's been going on this year and other satsangs. And my humble request to Guruji is, may Guruji bless each and every one. Thank you, Sangaji. Thank you, Guruji. अनंत ये सेवा देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी. Thank you, Subodh uncle. Thank you. And Anu aunty. Jai Guruji. Om Namah Shivaya. Shivji Sada Sahai. Om Namah Shivaya. Guruji Sada Sahai. बेहद शुक्राना गुरुजी महाराज.